So this is another question, 1.27. In a certain region of space, the electric field is along the z direction throughout. The magnitude of electric field is, however, not constant, but increases uniformly along the positive z direction at the rate of 10 to the power 5 Newton per coulomb per meter. What are the force and torque experienced by a system having a total dipole moment of 10 to the power minus 7 coulomb meter in the negative z direction? So to understand this question, let us first make a coordinate axis. Let us see, this is the Cartesian axis. Let us say that this is z axis. इसे हम z axis मान लेते हैं. ये positive z axis है. इसे y कर लेते हैं. इसे x कर लेते हैं. It is our choice कि हम इसे x, y, z अपने हिसाब से मान सकते हैं. तो हमने इसे y माना, इसे z. तो ये हो जाएगा, इधर पॉजिटिव y z एक्सिस है, तो ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव z एक्सिस. ठीक है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में इंक्रीजिंग है. So electric field is increasing per unit length. So we can write it dE upon dl. dE by dl is given 10 to the power 5 Newton per coulomb per meter. Okay, Newton per coulomb per meter. So this is the rate of change of electric field per unit length. Now उसके बाद क्या है कि हमने एक डाइपोल को रखा है, एक सिस्टम ऑफ डाइपोल को. मान लो यहाँ पे कोई भी एक डाइपोल रखते हैं, चाहे इधर रखो इधर रखो. सपोज मान लीजिए हमने यहाँ पे एक डाइपोल रख दिया, जिसका नेट डाइपोल मोमेंट जो है, डाइपोल मोमेंट इसका नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ है. सपोज ये पी डाइपोल मोमेंट है नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ. तो सबसे पहले क्या कह रहा है कि इसके ऊपर हमें निकालना है फोर्स कितना लगेगा. लेट अस सी फर्स्ट कि डाइपोल मोमेंट जो है पी, ये हमें मालूम है 10 टू द पावर माइनस 7 कूलम मीटर. एंड डाइपोल मोमेंट P को हम लिख सकते हैं, P can be written as Q multiply a small distance between the two charges. So a small distance can be written as dl. So Q dl is given 10 to the power minus 7 coulomb meter. Okay. So this is Q dl. Now what we have to find out, force. So force can be written as charge time electric field. So electric field is, if electric field is varying, so you can write it in small electric field term dE. So this is the force, and if we multiply dl and divide with dl, so the net force you will get is Q into dE by dl and Q into dl. You can write it as Q dl multiply dE by dl. So Q dl is dipole moment and dE by dl is the rate of change of electric field. So force on dipole acting is equal to 10 to the power minus 7 into 10 to the power 5 Newton. So this is 10 to the power minus 2 Newton force. Force acting is 10 to the power minus 2 Newton. So now see what will be the torque acting on the dipole. डाइपोल के ऊपर टॉर्क जो लगेगा, हमें ये देखना है कि डाइपोल मोमेंट के, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है. ठीक है. और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन क्या है, ये है. बोथ आर इन opposite direction, so angle between both is 180 degree clearly. If angle between electric field and dipole moment is 180 degree, then torque is PE sin theta, as we know, and sine 180 degree gives you 0. So torque will be 0. So no torque acting on the system of charge, but there will be force of 10 to the power minus 2 Newton. So this was question 1.27.